पाकिस्तानी टीम अभी तक वर्ल्ड कप में अपना पॉइंट्स नहीं ओपन कर सकी। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन के हवाले से क्या कहेंगे? किसी भी मैच में क्लिक नहीं कर पाए और शिकस्त में हमें बैटिंग साइड ज़्यादा जिम्मेदार नज़र आती है। इस हवाले से कोई डिस्कशन हुई है टीम मैनेजमेंट की तरफ से? मैं आपके आंसर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल आवर teammate Shawal Zulfikar's father died yesterday, and we as a team express our condolence with her and her family on this irreparable loss, and it's a sad news for us. जी आपका सवाल क्या था, फिर से रिपीट करिए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन जो है वो क्लिक नहीं कर पाई, जिसकी वजह से हम पहले 3 मैच हार चुके हैं और ऑलमोस्ट सेमीफाइनल की रेस से आउट हो चुके हैं। तो इस हवाले से कोई चेंजिंग्स नेक्स्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलने जा रहे हैं? सिर्फ टॉप टीम जा रही है, इंग्लैंड अनबीटन है। तो क्या बैटिंग लाइन में ओपनिंग स्टैंड बेसिकली स्पेशली जो है वो नहीं क्लिक कर पा रहा? तो उस हवाले से क्या डिसीजन कुछ हुए हैं या क्या आपकी प्लानिंग है? जी ऑब्वियसली हमने 3 मैचेस जिस तरह खेले हैं, तो उसके बाद हम लोगों ने मीटिंग में उस चीज़ को डिस्कस किया है कि हम क्या चीज़ें गलती कर रहे हैं और कहाँ हम लोग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड ऑब्वियसली बट जो हमारा कॉम्बिनेशन चलता हुआ आ रहा है वो हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन है, चाहे वो आप क्वालिफायर्स ले लें या साउथ अफ्रीका की टीम के अगेंस्ट जो हमारी सीरीज़ थी उसमें भी जो कॉम्बिनेशन था हमारा वही था। तो ऑब्वियसली हम ट्रस्ट कर रहे हैं अपने बैटर्स पे भी, क्योंकि हम उनको चांस दे रहे हैं कि वो कम बैक करें, और मुझे बिलीव है कि हम जिस तरह नेट प्रैक्टिसेस पे अपने प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में कम बैक करेंगे। अच्छा, मेरा सवाल यह है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर हम देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा टारगेट चेज हो रहा है, तो हम एक तो स्कोर भी नहीं कर रहे, बैटिंग लाइन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और क्या वजह है, कहाँ पर ऐसा गैप है कि हम बैटिंग में फेल हुए हैं? और दूसरा ये बताइए कि टारगेट चेज करने में भी प्रॉब्लम पेश आ रही है। टॉस जीत कर आप दावत दे देते हैं आगे, फिर टारगेट चेज करने में प्रेशर होता है। तो इसके हवाले से भी कोई हिकमत अमली बनाई गई है कि पहले बैटिंग की जाए ताकि जो टारगेट है वो भी देने में थोड़ी सी आसानी हो, प्रेशर ना हो, हम 200 से ऊपर तक का टारगेट दे सकें ताकि मैच के लिए कोई फाइट तो कर सकें। तो इसके हवाले से बताइएगा क्या कोई हिकमत अमली इस हवाले से बनाई गई है? देखें, जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो 2 वेन्यूज़ में हो रहे हैं, तो आई थिंक जो भी वेन्यूज़ में, इंडिया वाले वेन्यूज़ में जो भी मैचेस खेले गए हैं उसमें चेजिंग भी हुई है हाई टोटल की, और वो बने भी हैं। तो ऑब्वियसली वो विकेट्स इधर की डिफरेंट हैं, उधर की काफ़ी डिफरेंट है, तो हमें वो चीज़ का आइडिया नहीं है कि वो किस तरह की विकेट्स हैं। और दूसरा, जैसा कि मैंने आपका भी क्वेश्चन का आंसर दिया था कि हम लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि जिस तरह हम लोगों के नेट्स में प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम ग्राउंड में रहें, बैटर्स जो फाइट करते रहें अंदर, क्योंकि ज़रूरी हमारे लिए यही है कि अगर हम बैटिंग से 200 प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली फिर हमारे जीतने के चांसेस होंगे। तो हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगले मैच में आप लोग देखेंगे कि हम अच्छा करेंगे। वन मोर क्वेश्चन कि पाकिस्तान की टीम वाहिद ऐसी टीम है जो सिर्फ कोलंबो में खेल रही है और ग्राउंड का एडवांटेज जो होता है वो भी हम नहीं ले पा रहे। काफ़ी दिन पहले भी टीम आ गई थी यहाँ पे, तो क्या इन कंडीशंस का फ़ायदा भी नहीं उठा पा रही टीम? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये तो मतलब ये कि हमारे एक एडवांटेज है कि हम सेम वेन्यू में खेल रहे हैं, बट ऑब्वियसली दूसरी टीम भी प्रिपेयर करके आ रही हैं, तो ये चीज़ मतलब कहना इतना वो नहीं है कि सब क्या कहते हैं प्रिपेयर करके नहीं आ रहे होंगे और हमें एडवांटेज मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तभी हमें उस चीज़ का एडवांटेज मिलेगा, और हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे अगला मैच अच्छा खेलें। अच्छा, ये बताइएगा कि हम 3 मैच हार चुके हैं, अब हमारे बकाया 4 मैच रह गए हैं, तो हम क्या सेमीफाइनल की दौड़ के अंदर शामिल है? अगर हम सारे मैच जीते हैं तो फैंस भी जानना चाहते हैं कि क्या हम अभी भी अगर सारे मैच जीते हैं तो सेमीफाइनल तक पहुंच सकते हैं? जी देखें, अभी भी टूर्नामेंट ओपन है और हमें पूरा होप है। ऐसा होता है कि टीमें जो हैं वो शुरू के मैचेस हारती हैं और बाकी सारे जीतती हैं, तो हमें इस बात पे बिलीव है कि हम अच्छा खेलें और फिर हम 1 बाय 1 मैच को लेके चलें, तो हम अच्छा करेंगे। बाकी उम्मीद तो यही है कि अभी टूर्नामेंट ओपन है, 4 मैचेस भी अगर हम जीतते हैं तो हम सेमीफाइनल में जा सकते हैं। Sorry if this has already been asked, but as a member of the spin group, obviously there is a lot of importance here for spinners. There's, the conditions are good for spinners. How do you embrace that pressure, knowing that as a spinner, there's kind of an extra pressure on you guys to perform against a team like England who might struggle? Yeah, but as you know, we have spin
strength. It's our strength, and we have world class spinner like Sadia Iqbal, Nasha Sandhu, and they are bowling really well. And I'm also back at the bench and not even playing, so I'm preparing for my opportunity. And as a spin, we are only looking forward for matches, and we are confident enough in our spin because it's our strength. And on that, as you say, it is a strength of yours, and I'm sure you've learnt a lot from the other players as you try and make your way into the 11. So how good is it just to have that quality there, knowing that you can improve, knowing that they're there helping you, but also it's kind of a site for you to strive for as well? Yeah, obviously it's a good opportunity to see all players performing, and even watching some good leg spinners, because I'm also a leg spinner, so it's quite a treat to the eyes to watch them. And even in our team there is Sadia Iqbal, she's number 2 bowler right now, so she's a inspiration for me even in the team. So I learned a lot, and look, always there is a chance of improvement in every aspect, and we are working on it. It's been a week since the Australia match, and that was a very nicely fought match between both teams. Now that you go into a fixture watching England already play here, is there anything that you think they can try and access to get a little bit of an upper hand? Yeah, we are working on matchups with England, and we have planned, and we will try to execute it properly. And if I believe in, and even our team believe in process, if we do process right, so we will be in the winning side. And whether to chase or to defend, what would you say is a decent target? Since you've played 3 matches, it's not been easy to figure that out, but what would you say is a good target? I know that our okay, it's okay, sir. No, it's okay. As you know, our bowling is our strength right now, and we are looking for a total 200 plus. Then we can chase it or defend it easily. So if we are bowling first, then we will try to make them restrict under 200. And if we are defending, so our batting should at least 200 plus, so we can defend with our bowling. Thank you. Good luck. Yeah. Thank you. Good luck tomorrow, Alice. I believe this is your sort of first international tour in the subcontinent. What have you sort of learnt about yourself, and what have you learnt about the conditions here in India and Sri Lanka? Yeah, thanks. It's been an amazing start, that's for sure. I've learnt a lot, especially with the extreme conditions, I guess, that we're playing in, and I guess that's a really cool part of being able to tour different places, is you can kind of experience that and learn that. And we've got some amazing senior pros who especially play spin brilliantly, so just picking their brains and having lots of conversations around training has been amazing, and really enjoying my first experience. One of those senior players is obviously Nat, who's in great form at the minute. What has she told you, anything specific, any specific pointers in how you go about things? Yeah, obviously what a special innings the other day from her. It was amazing to watch, and she's spoken a lot about kind of what her method was, which was great. To be able to kind of get that insight into what she's thinking has been crucial. And I think all of us as a batting unit are lapping that up and kind of taking as much information as we can get, especially being able to play another game here at Colombo and have 2 games on the bounce. It's great to then go into the next game with a bit more information and have a bit of a clearer plan and be able to really be specific with what our plans are to each different bowler against Pakistan especially. Like you said, it's the second game in Colombo and you're playing against Pakistan, which has a good spin attack. Anything that England is going to prepare specifically, all of you are going to keep in mind for the next match? Yeah, definitely. I think what we've seen by Pakistan so far is that they've been involved in some really exciting games of cricket, and they've had teams kind of on the back burner a little bit. So just making sure that we're really specific with what our plans are to each individual bowler, and whether that be seam or spin. But like you said, with the extreme conditions that have been so far, it's
kind of what our best options are to each spinner and kind of really trusting that. And that's been one of the good bits around kind of what we've been doing at training, is being really specific and yeah, getting ourselves into the best position going into the game. Sorry. Off the back of that, in particular here, but also throughout the tournament, we've actually seen, I suppose, a bit of a trend where the top order hasn't quite fired, and it's kind of taken the middle and the lower order to try and scratch together a total. As someone who's coming in a little bit further down, are you, in your head when you're watching, are you kind of expecting something like that to happen and preparing yourself to come out earlier than maybe normal, or how do you kind of compartmentalise everything as it goes on? Yeah, I think obviously that's been a bit of a trend over the tournament so far, and I'm sure it's probably been something that a lot of teams have spoken about. I think for me, I think we bat so deep. The depth in our squad is incredible, and every batter who goes out to bat, I can speak for everyone in the sense of we've got full faith in them. But yeah, I think one of the really good things about what we've done so far is we've had one player from that top 5 or 6 who's really dug in and got a big score and really influenced the game. And yeah, we've spoken a lot as a group about kind of when it's your day, kind of making the most of that, but then also those partnerships around it. Can we make them from 20s and 30s to say 50s and 60s and try and build kind of that really competitive score as a batting unit. But yeah, whether that's coming in earlier in the innings or coming in with 10 overs to go, yeah, that kind of mindset, that doesn't change, which is great. And it's a really good place to be when you're batting the whole way down to your number 11. Thanks very much, everyone. Cheers, thank you.